बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। शजर हजर जमीन व आसमान जिसकी तारीफ और तौसीफ में मसरूफ और मशगूल है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं आज का प्रोग्राम जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के हरकत और सुकनात पर मबनी है। ये एक तरह का एक यूनिक प्रोग्राम है, सबसे हटकर प्रोग्राम है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इस स्कूल के सदर मुदरिस और तमाम स्टाफ को कि वो आए दिन इसी स्कूल में अलग अलग तरह के प्रोग्राम लेते हैं जिससे स्टूडेंट की हौसला अफजाई होती है, उनके हौसले में तरक्की होती है। तो इसी तरह का जो प्रोग्राम है इसका इनेकाद हो रहा है, जिसकी सदारत के लिए मैं इसी स्कूल के सदर मुदरिस अली जनाब नईम सर साहब का नाम पेश करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के सदारत की मैं तारीफ करता हूं। तालियां। उसी तरह जिस तरह एक बगीचे में मुख्तलिफ फूल होते हैं जो अपने खुशबू से उस बागीचे को, उस गुलशन को मातर करते हैं, खुशबू देते रहते हैं, उसी तरह मैं इसी प्रोग्राम में हमारे तमाम असतिज़ा जो मेहमान खुसूसी की हैसियत रखते हैं वो भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी जगह ले और हमारे इस महफिल को मुअत्तर करें। आइए प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक हमारा जहां है, उसमें जमीन व आसमान, चांद सितारे, सूरज तमाम चीजों को पैदा किया है। उसमें इंसान को भी बनाया है, अशरफुल मखलूकात में बनाकर भेजा है और बेहतरीन किस्म के आज़ा नसीब फरमाया है, अता किए है। उन आज़ा की हरकत हम हमेशा करते रहते हैं और उसी हरकत के निस्बत से, उन्हीं आज़ा की हरकत की निस्बत से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और इसके जरिए बताया गया है कि हर हरकत का एक्शन जो कर रहे हैं, मूवमेंट जो कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट, उनका नाम क्या है। तो इसी के लिए ये प्रोग्राम रखकर वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी बनाने के लिए, ज़ख़ीरा अल्फाज बनाने के लिए इंग्लिश में ये नाम जो तो बच्चा करेंगे या एक्शन, आप जो तो नाम बोलेंगे। अहमद शाह क्लास, दानियल 7 क्लास, रेहान 8 क्लास, ज़ीशान, अहफाज पटेल, अहफाज, साकिब, इन तमाम बच्चे ये हरकत करेंगे, उनके नाम बोलेंगे। आप जो तो उनके नाम उर्दू में बताएंगे। एक्शन करेंगे और इंग्लिश में इस एक्शन को क्या बोलते हैं ये आप बताएंगे। ये बताएंगे इंग्लिश में, आप उर्दू में बताएंगे। चलिए साकिब शाह। Penduculate. I am pendulating. बोलो क्या है तो उसको क्या बोलते उर्दू में? हाँ, Yawn. जमाई लेना. I am yawning. वेरी गुड। बहुत अच्छा, तालियां बजाओ। नेक्स्ट। Sneeze. Sneeze. छींकना. I am sneezing. वेरी वेरी गुड। गुड, बहुत अच्छा। Snore. खर्राटे लेना. I am snoring. वेरी गुड। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। Hiccup. I am hiccuping. वेरी गुड, बहुत अच्छा। Cough. खांसना. I am coughing. बहुत अच्छा। Burn. डकार लेना। I am burn. वेरी गुड, बहुत अच्छा।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिलिंग आंखें मच मच करना आई एम बिलिंग बहुत अच्छा। शाबाश और ये तमाम बातें ये तो अभी मालूम है। हाँ, who will tell what action he is doing? Raise your hand only. यस ही इज पेंडिकुलेटिंग, वो अंगड़ाई ले रहा है। वेरी गुड अच्छा सही। Right answer. क्लैप फॉर हर नेक्स्ट Next. What action he is doing? Who will tell? Hello, can you see me well? Hand raised करो। यस हाँ इजार। यॉन, ही इज यॉनिंग। वेरी गुड एक्शन कौन बताएगा? What हाँ action he is यस done? ही इज स्नीजिंग, वो छींक रहा है। Very good. good. शाबाश हाँ व्हाट एक्शन ही इज डूइंग यस हु विल टेल अंजुम ही इज इग्नोरिंग, वो खराटे ले रहा है। शाबाश ही इज इग्नोरिंग, स्नोरिंग, वो खराटे ले रहा है। ये स्नोरिंग। शाबाश हाँ यस हाँ बोलिए। व्हाट एक्शन ही इज डूइंग? ही इज हिकअपिंग। शाबाश ही इज हिकअपिंग। वेरी गुड शाबाश नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट। हाँ व्हाट एक्शन ही इज डूइंग? हाँ रेहान ही इज कपिंग, वो खा रहा है। शाबाश कभी वो खा रहा है। वेरी गुड चलो हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। खान खान बता रही है। हाँ। व्हाट एक्शन ही इज डूइंग? ही इज बर्पिंग, वो डकार ले रहा है। शाबाश वेरी गुड। ही इज बर्पिंग 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 हाँ। वो बता ले रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेल्चिंग बर्पिंग लो। हाँ व्हाट एक्शन इज डूइंग हाँ हाँ, yes. ही इज स्पीडिंग, वो He's छींक रहा है। spitting. यस ही इज स्पीटिंग He is spitting. वो थूक रहा है। चलो Very नेक्स्ट good. ये बगरा देख कर बता सकते हो। बताइए व्हाट हाँ। he is doing? वाह। He is doing. हाँ ही इज बिलिंग, ही इज ब्लिंकिंग He डबल is बोलो। blinking. वो शाबाश आंखें मच कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठो बैठो बताओ। हाँ आई एम सिटिंग क्रॉसेस शाबाश क्रॉस लेग्ड वेरी गुड क्रॉस लेग्स। क्रॉस लेग्ड लेग क्रॉस लेग। पालती मार के बैठना क्रॉस लेग, पालकी मारकर बैठना। वेरी गुड हाँ आई एम सिटिंग इन सीजा I am sitting in Caesar. He is sitting in Caesar. he is sitting in सीधा। कायदे बताओ, बताओ। में कायदे में बैठना कायदे में बैठना। वेरी गुड अरे ये कैसे बैठे? रिक्लाइनिंग आई एम सिटिंग इन रिक्लाइनिंग पोजीशन शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छा। कौन सी पोजीशन का हमने? हाँ नाउ गदम sir will ask the question on three situations okay you will have to answer हाँ what position what position he is doing? yes In what position he is sitting? ही इज सिटिंग क्रॉस लेग very nice He is sitting in cross leg. Cross leg. हाँ next Next, what position he is doing? What position he is doing? yes जोर से बोला, बुलंद आवाज में। ही इज सिटिंग सीजा। He is शाबाश sitting in position of Caesar. very good He is sitting in position of Caesar. हाँ. Next game. Golden. Akshat. ही इज सिटिंग इन क्रॉस लेग no No, no no. Your answer is wrong. शाहिद रिक्लाइन पोजीशन
शाबाश, वेरी गुड. रिक्लाइनिंग रिक्लाइन पोजिशन. वेरी गुड. हाँ, पूरे की पोजिशन समझ में आ गया. हाँ, बुरा मत बैठो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो. चलिए, ये हो गया अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पोजिशन, मूवमेंट ऑफ बॉडी पोजिशन.